Good morning, team. There is an update from on monsoon, which was given by meteorological department. So after SkyMet gave one day before, meteorological department said it will be a normal monsoon. So SkyMet talked about 94%. Here they are talking about 96%, and they are saying the chances are 35%. It can be right. Probability is 35%. So plus or minus 5% is a deviation. But they are saying first 2 months can be better. So the monsoon, whether it is 90 or 100 is not important. But whether July and August, if we are going to get good monsoon, is more important. So if that happens, then the distribution of the rainfall will be very good. So this is something very positive. Market gave a thumbs up yesterday. The IMF has cut India's FY24 GDP forecast to 5.9% from 6.1%. So here, the growth, has been getting softer. So we have slight problem, but it depends on how corporates behave. When interest rate starts to cut only, with the lag effect, the economy can grow. High interest rates, economy will slow down. And when you have, inflation tightening norms, it is going to be very difficult. International sugar prices trades at 10-year high, which is positive for Balrampur Chini, Renuka Sugar, Tiruveni, EIDBI, and other sugar companies. So sugar companies should be something which will take off. So we need to watch them. We like hotel space, Mahindra Holiday, Indian Hotel. We have a buy call on that already. And we like Shriram Finance, M&M Finance, Bank of Baroda, HDFC Bank, and RIM, RHI Magnesia. This stock looks good. And we even like TCPL packaging. We have been saying this for some time now. And I think this stock can give another 10 to 15% return from current level. Radico in a press release has said, in FY23, their vodka magic movements has crossed 5 million cases. It was 3.8 million cases previously. It is more than 25% growth. And even 8 PM premium black whiskey has achieved 3 million cases. It was previously 2.1 million cases. So this is positive for Radico. Indian-made foreign liquor of late, only limited companies are performing. Sanofi has informed about Government of India NPPA price ceiling. So normally, there is a pricing mechanism and pharma price at the price which medicines can be sold. So one of their medicine has come there, which is Lantus, which is an insulin gargling brand. So the price cut will be 21%, slightly negative for Sanofi. Business Standard has reported that Vedanta may issue NCD, a non-convertible debenture. And it even says, the parent company which is listed in UK, which is called Vedanta Resources, they would sell 5% stake in VDL in India. Vedanta Resources holds 70% stake in VDL here, Vedanta here. So 5% liquidation will not have a major impact, but company will raise 5,000 crores, which will enable them to repay their international loans. And they are saying it might have a green shoe option. HDFC Bank to rise up to 50,000 crores via bonds in FY24. That is about $6 billion, including Tier 1 and Tier 2 bonds. HDFC has been very, very aggressive in their deposit mobilization bank expansion. It is because of the merger. They will have a huge leeway in their expansion. So we are very positive on HDFC Bank, HDFC merger, because the kind of growth and the next level they can go will be very higher. If you're a long-term investor, consider buying HDFC Bank or HDFC, because there is no arbitrage there. In one interesting news, Foscom may start construction of Bengaluru plant in May. 300 acres plot will be Foscom
largest mobile manufacturing unit in the country. It might generate almost 50,000 jobs over a period of time. Very positive. BHEL and Titagar Wagon has been awarded an order for 80 numbers of Vande Bharat train set from Ministry of Railways. The supply should be in 72 months and 35 years of maintenance. Per train set, they will get 120 crores, which works out to 9,600 crores. Time Technopast has got an order from IGL for a value of 54 crores, supply of CNG cascade, type 4 composite cylinders. We are not positive about Time Technoplast. We would suggest TCPL in packaging is a better bet at this level. Lemon Tree has signed 2 franchisee agreement for upcoming hotel under the company brand Lemon Tree Premier and Lemon Tree Resort in Nepal. So Lemon Tree Premier will have 102 rooms. The operation will be January 2024. Lemon Tree Resort, which is again in Nepal, will be 81 well-appointed rooms and will be operational from October 23. Keystone Real Estate, Rustamji as we call it, they have come with the provisional numbers. So FY23, they are saying they did a sales of 1,604 crores, which is slightly lower compared to previously. Collection also is 1,865 crores. Last year they did 2,038. They are saying that there is one institutional sales that did, but they're not great numbers from Rustamji, whatever I can understand. Marathon Reality, FY23 to sales value was 753 sales value for 753 crores and collection 716. So they have done better and they have reduced their debt meaningfully. So their net debt is 864 crores. Previously it was 1,189 crores. So we like this real estate place, but we are very stock specific. We like Godrej Property, we like Oberoi Realty, Prestige, Phoenix Mill, Kolte Patel, DLF, Brigade, Ashiana. We said that it is a low cost housing. Bank of Baroda provisional numbers has been very good. Even ICICI Bank we start to like. In NBFC we have given Shriram Transport and M&M Finance. So these are few stocks. The mid cap and small cap have started to perform. So we need to be there. And whatever is beaten down, the rally is very fast. If you are in a quality stock, if you average out, you are stuck up at higher level. If you average out, the chances of getting an exit is very high. But QSR companies are doing very bad. Whatever is connected with pizza, they are doing very bad. Let it be Jubilant Food, let it be Devyani, let it be your Sapphire. They are not doing good. Competition is hotting up. Now the only player in QSR which is doing good is Mrs. Bector Food, because they supply pizza bun and burger buns. So they are doing better business, not the pizza companies. With that, over to you, team. Thank you, sir, and good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. एमईटी में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कल उन्होंने कहा कि जो मॉनसून है वो नॉर्मल रह सकता है, बट उन्होंने रेंज 96% दी गई है. और स्काईमेट ने कहा तो नॉर्मल नहीं रहेगा और उन्होंने रेंज 94% दी थी, तो रेंज को एंट्री हमें लिखी, बट हमने कहा कि 35% के बिलो हमें लगता है ये कि राइट जा सकता है, डेविएशन उन्हें 5% का लग सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि जो फर्स्ट 2 मंथ्स की रेंज अच्छी रहेगी, बट जुलाई अगस्त की रेंज थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वो आगे जो टोन है वो सेट कर सकती है. सेकेंडली, IMF ने जो GDP की फोरकास्ट है इंडिया के लिए वो FY24 के लिए रिड्यूस कर दी है, जो कि करंटली 6.1 था उससे करके 5.9 कर दी गई है. इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस हमें रिकॉर्ड्स पर दिख रहे हैं, तो इससे बेनिफिट बेसिकली शुगर कंपनीज को होगा और शुगर स्टॉक ऑफ फ्लेवर बदल सकता है. बलरामपुर चीनी, EID, पैरी हो गया, त्रिवेणी शुगर, रेणु का शुगर, जैसे स्टॉक्स पे यहाँ पे हमें ध्यान रख सकते हैं. होटल स्पेस पे देखना है तो हमें MHRL अच्छा लग रहा है. इंडियन होटल्स जैसे हमारी रिपोर्ट कॉल भी उसके ऊपर चालू है, तो आप उस पर फोकस रख सकते हैं.
और अगर एनबीएफसी स्पेस में जा रहा है तो श्रीराम फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंस पे भी ध्यान रख सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में जैसे एचडीएफसी बैंक का मर्जर अभी नियर आ रहा है, सो अब कोई भी स्टॉक में ले सकते हैं, दोनों ही स्टॉक आउट परफॉर्म होंगे। इवेंचुअली वो एचडीएफसी बैंक ही बनेगा, दोनों ही आर्बिट्राज जैसा अभी कुछ रहा नहीं, हार्डली 1% का आर्बिट्राज है, तो आप कोई भी स्टॉक लीजिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बेटर ही रहेगा। टीसीबीएल पैकेजिंग हमें अच्छा लग रहा है, जो कि यहाँ से हमें लगता है 10 से 15% के लिए मोमेंटम के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। RHIM एक स्टॉक है, ये भी हमें फोकस में रखना चाहिए, ये भी स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। और अगर हम रियलिटी स्पेस में देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ओबेरॉय रियल्टी हो गया, टीएलएफ हो गया, फिनिक्स स्पेस हो गई, ये सारे स्टॉक्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्यूएसआर स्पेस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्यूएसआर स्पेस में बहुत ही कंपटीशन स्टिफ हो गया है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमिनेंट प्लेयर्स है उन्हें भी तकलीफ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जुबलेंट फोर्ट हो गया या सफायर हो गया, तो कंपटीशन बहुत लग रहा है। और इसी स्पेस में हमें अगर रहना है तो हमें बेटर फूड्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब कंपनीज को बन सप्लाई करके पिज्जा जो ब्रेड्स होती है वो करती है। तो ये बेसिकली एक वही आप नहीं कर सकते जो मिसेस बेटर फूड का की कमी है। अभी हम देख रहे हैं जैसे रियलिटी के नंबर्स आए हैं, तो कीस्टोन जो रुस्तम जी के नंबर्स देख रहे हैं तो इतने अच्छे नहीं थे। 1604 करोड़ की सेल थी जो कि लोअर थी। कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखा जाए तो 18,000 के आसपास थी, जो कि पहले 2038 के आसपास थी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे मार्केट्स में बाकी कंपनीज के नंबर आ रहे हैं उसके मुताबिक ये इनलाइन नहीं है। सेकेंडली मैराथन के भी नंबर देखेंगे, FY23 में उनकी जो सेल थी वो 750 करोड़ के आसपास की थी। कलेक्शन देखा जाए तो 760 करोड़ की है, और डेट ने रिड्यूस कर दिया जो कि पहले 1200 करोड़ के आसपास था, उससे वो 850 का। सो ओवरऑल नंबर ही बेटर ही थे। लेमन ट्री एक नया होटल ओपन कर रहा है नेपाल में, जो कि प्रीमियर और रिसोर्ट के दो सेगमेंट्स में रहेगा, जो कि 102 रूम का होटल रहेगा जो कि Jan 24 में होगा, और 81 रूम्स का जो कि रिसोर्ट में होगा जो कि October 23 में। टाइम टेक्नोप्लास्ट ने भी आईजीएन के साथ उन्हें एक डील भी दी है जो कि 54 करोड़ के आसपास है, जो कि सीएनजी कैश कर देंगे, बट हमें तक पॉजिटिव नहीं है टाइम टेक्नोप्लास्ट पे। तो अभी अगर हमें इस स्टॉक पे ध्यान रखना है तो टीसीबीएल पैकेजिंग को हम ध्यान रख सकते हैं, जो कि वैल्यूएशन वाइज हमें बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशन पर मिल रहा है। फॉक्सकॉन ने कहा कि वो अपनी जो फैसिलिटी बैंगलोर में वो मई में स्टार्ट कर सकते हैं, तो ओवरऑल देख रहे हैं 50,000 तक की जॉब शॉप है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आ सकती है। और टीटागढ़ जो भेल और टीटागढ़ फाइनेंस में भी वंदे भारत के ऑर्डर पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, जो कि 72 मंथ्स में उन्हें देना है, और 35 ईयर्स का मेंटेनेंस रहेगा। 120 करोड़ की एक ट्रेन से 9,600 करोड़ का टोटल रेवेन्यू में जनरेट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जैसे रेडिको के भी नंबर्स आएगा। अगर हम FY23 वोडका की सेल्स हमें ऊपर जाती है, जो कि वार्षिक कोमेक्स नाम से सेल होती है 5 मिलियन केसेस के आसपास है, जो कि पहले 3.8 थी। सो ओवरऑल ये 25% का ग्रोथ है, जो कि इनकी विस्की ब्रांड है 8 पीएम उसकी भी 3 मिलियन केसेस पे देखे, जो कि पहले 2.1 थे। तो इंडियन में फॉरेन लिकर में हम देख रहे हैं लिमिटेड स्टॉक्स में ही थोड़ा सा ट्रैक्शन आते हुए देख रहे हैं, उसमें रेडिको एक अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट सैनोफी ने भी कहा कि एनपीपीए की जो प्राइस सीलिंग है उनकी, जो इसमें मेडिसिन आती है इंसुलिन गार्गलिन, उसके ऊपर 21% का प्राइस आ सकता है, तो ओवरऑल के लिमिटेड नेगेटिव हो सकता है। वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो कि यूके लिस्टेड है, वो वेदांता में उनका 70% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से भी अपना 5% का स्टेक रिड्यूस करेंगे। बेसिकली इनको जो इंटरनेशनल डेट पेमेंट करना है उसी के चलते हुए 5,000 करोड़ जुटाएंगे, और ग्रीन शूट ऑप्शन भी रखेंगे। तो करेंटली 70% के आसपास की इनकी होल्डिंग है इस पे। या ओएनजीसी ने कहा कि उन्होंने कमीशन किया न्यू गैस कनेक्शन स्टेशन, जो कि बोकारो को कोलबार्ड मिथिल ब्लॉक में है। ये फर्स्ट गैस कनेक्शन रहेगा जो कि कंप्रेशन स्टेशन रहेगा बोकारो फील्ड में, और ये 5 बोकारो सीबीएन ब्लॉक में होगा, जो कि ओएनजीसी आईओसीएल के जीवी में बनेगा। कल्तुर पावर ने कहा कि उनकी काम ने बाकी ऑर्डर 3,080 करोड़ का, जो कि मार्च से अप्रैल इस बार है, और जो ऑर्डर इंक्लूड करते हैं 571 जो कि डेटा सेंटर बिल्डिंग है, जो कि 1234 करोड़ का, ईपीसी का वर्क 750 करोड़ का, और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का जो है 708 करोड़ का है। और उन्होंने एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डिंग भी बनाई 235 करोड़ का, जो कि अफ्रीका रीजन में रहेगी, और 150 करोड़ का ऑर्डर उनको टीएनडी सेगमेंट से आया, जो कि ओवरसीज सेगमेंट से है। सूला वाइनर्स ने कहा कि उनके जो Q4 के नंबर अच्छे, उनमें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू सेल्स दिख सकते हैं। एज पर उनके रेवेन्यू सूला ने 15% ओन किया ब्रांड में, जो कि 100 करोड़ के आसपास है मार्च क्वार्टर में, क्योंकि कंपेयर देखा जाए तो 90 करोड़ का है। सूला वाइनर्स की जो ब्रांड्स की सेल्स हो रही है 1 मिलियन केस हो गई, विद लाइट ऑफ प्रीमियम वाइन्स की सेल भी 5 लाख केस हो चुके हैं अभी तक, जो कि फर्स्ट टाइम है। मुंबई की डेट इश्योरेंस अगर हम देखेंगे, आरईसी ने 2848 करोड़ रेज किया, जो कि सेल किया बॉन्ड, जो कि मैच्योरिटी 3 इयर्स में होगी, जो कि 3 मंथ्स के इंटरेस्ट रेट पे देखा जाए 7.51% के आसपास का है। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि उनकी बोर्ड भी एक मीटिंग कर दी, जो कि रेज कर रहे हैं फंड रेजिंग आपको 50,000 करोड़ के लिए, जो कि टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड्स के लिए हो सकता है,
और ये डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे। टाटा स्काई साइंस ने कहा कि उन्हें यूएस अप्रूवल मिल गया है जो कि एफडीए से मैन्युफैक्चर करेंगे टॉपिकल सॉल्यूशन। एस्टक लाइफ साइंस ने कहा कि जो उनकी सब्सिडी है गोदरेज एग्रोवेट जो कि एक एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रबाले में ओपन कर रहे हैं, आदि गोदरेज सेंटर फॉर केमिकल रिसर्च डेवलपमेंट रहेगा। बेसिकली एक फोकस करेंगे लीडिंग एज इनोवेशन और डेवलप करेंगे सस्टेनेबल और सेफ सोल्यूशन जो कि फॉर पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए रहेगा, जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज जो कि इनोवेटर कंपनीज के लिए और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पारस डिफेंस के लिए है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, पारस एंटीड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि सब्सिडी है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया स्पेस कवर एक्सप्लोरेशंस के साथ, जो कि इंजीनियरिंग डेवलप करेगी एक डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेस इंटेलिजेंस के लिए। सोलार इंडस्ट्रीज ने कहा कि उन्होंने रायसन एक्सप्लोसिव केमिकल लिमिटेड जो कि आईडीसीएल के नाम से जानता है, बेसिकली ये एग्रीमेंट एक साइन की एक्विजिशन करने के लिए। और सोलार इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करती है बल्क एक्सप्लोसिव, पैकेज एक्सप्लोसिव और इनिशिएटिव आर्म्स। तो आरईसीएल का भी बिजनेस सिमिलर लाइंस में है। सो ये प्रोडक्ट्स अलाइड है माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए। और कंपनी को अपना बिजनेस और ऑपरेशन पे एक्सपांड करना है। टर्नओवर देखा जाए तो 11,920 लाख के आसपास का है, 1192 करोड़ के आसपास का है। ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी और ये मर्जर है, उन्हें लगता है 31 मार्च 2024 तक हो सकता है। एलटीटीएस के लिए सेंटिमेंट नेगेटिव है क्योंकि उन्होंने अग्री की है $9.93 मिलियन पे करने के लिए यूएस में। उनका जो केस चल रहा है यूएस जस्टिस ऑफ कोर्ट में, जो कि 2014-19 में देखिए H1B एक्सपेंसिव B1 वीजा उन्होंने इशू किया था, जो कि कॉस्टली H1B करना चाहिए था, और एलटीटीएस ने एक्वायर किया था P1 वीजा। तो ओवरऑल अच्छी पॉजिटिवली आज अगर हम की रिजल्ट पे देखेंगे तो टीसीएस के रिजल्ट्स के नतीजे आने वाले हैं, सो हमें वो स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was recovery in the market and index was up by 98 points, where Nifty has closed at 17,722 levels. So this is positive sign. So we believe that Nifty should be heading towards 17,800. That was our weekly upside target. And gradually over and above, whenever Nifty stays above 17,800, we are looking for 18,000, 18,200 on the upside. So the bias is positive. Having said this, on the lower side, the breakout was seen from the levels of 17,500. So now that level will act as a support. So the bias is positive, higher side 18,000, 18,200, immediate resistance at 17,800. This is only for a day or two. So as and when we trades above 17,800, we should be heading higher. Same with the Bank Nifty. Bank Nifty was aggressively strong as compared to Nifty. The Bank Nifty has closed at 41,336. It has climbed above 41,000, which is again a strength. Bank Nifty was up by 500 points in yesterday's session. So net even the Bank Nifty is looking positive. So the stocks like Kotak Bank, Bank of Baroda, ICICI Bank, Federal Bank, and ICICI Bank, these are the counters which are looking technically strong. For the Bank Nifty, at the start of the week, we have mentioned this level of 41,500, 41,600 is likely to be the resistance, because 41,600 was the previous month high. So as and when when the Bank Nifty climbs above 41,600, Bank Nifty has potential upside to target close to 43,000, 43,500. So the bias is positive for the Nifty and Bank Nifty. So we'll continue with that. In yesterday's session, we observed that the metal space, specifically JSW Steel, Hindalco, and Tata Steel, have seen very good amount of buying, and there was a technical breakout in yesterday's session. So JSW is something which is looking very strong on charts. So JSW Steel, from the current level of 713 can move up to 760, 780 over the couple of weeks. So bias is quite strong positive in JSW Steel. Whereas this Hindalco and Tata Steel can be viewed as a trading bet from the 1 or 2 weeks point of view. So after that, coming to derivatives data, we have seen a short built up in short covering in yesterday's session. And Nifty futures to the tune of minus 3.87%, which was a decrease in share by almost minus 4.35 lakh shares. The put call ratio has gained from 1.09 to 1.19 ratio, which is also a sign of strength. The maximum open interest was seen in the 18,000 call option, which will act as a resistance, and then on the lower side 17,500 put option. So that should act as a support.
In the Bank Nifty has also seen a short covering to the tune of minus 0.62%, which was in decline of very marginal 16,000 shares in the OI. The put call ratio has gained from 0.71 to 1.23, which is very strong sign. The maximum max OI was seen at 41,000 put, so that will be the support, and higher side 41,500 call option, so that will act as a resistance. And after this, from the derivatives point of view, we observed that on the sectorial front, auto, banking, and cement has seen a long build-up, whereas capital goods, FMCG, and pharma sectors have seen a short build-up. This is from a derivatives point of view, from a day-on-day basis. Next, the FI data on index future, they went long, close to 24,420 contracts, and their net short position is now almost close to 60,000 contracts. Even this long short ratio is an improved till 28%, which is again on the positive side. So climbing about 25 levels is the first sign where we figure out there can be some strength coming in. So overall, net the bias is positive. Metal is one sector which we believe can be seen, can be kept on a watch list. Beside this, Mahindra Holiday is one call which we initiated in yesterday's session. We are quite positive on the MHRL, and followed by that, there are two stocks which are technically positive, Prince Prime and the Polycap. So we do keep a watch on this. So that's all from my end, and hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hi, good morning, team. So first, starting with Aztec Life Science. So Aztec Life Science, which is a subsidiary of Godrej Agrovet, has launched advanced R&D center in Rabale, Mumbai. So this facility will focus on leading edge innovation and developing sustainable and safe solutions for people, and providing services to contract development and manufacturing place. So this is positive. Secondly, for Paras Defense. So Paras Antidote Technologies, which is a subsidiary of this company, has entered into a MOU with Space Kava Explorations for indigenous development and deploying of space intelligence. So again, a positive development. Third, solar industry. So solar industry has agreed to make investment in Rajasthan explosives and chemicals. So this is also similar business to what solar industries does. So this is a kind of horizontal merger and will be positive for the company. Then on LTTS, so L&T Technology has agreed to pay a fine of nearly $10 million to US. That is because of some violations that were done between 2014 to 2019. The US Justice in a statement had said that the company had acquired less expensive B1 visa instead of HB1 visas. So this does not bode well for the company. And lastly, TCS will be reporting its results uh, today, and so the key thing to watch out would be the dollar revenue guidance and margin outlook for FY24. So that's it from me. Over to you, the retail team. Good morning, everyone. Few updates from my side. First update on Kalpataru Power Transmission and its arm have bag order of worth 3,079 crore in the March and April so far this year. The order includes civil works for the data center and buildings around 1,234 crore, and EPS order is 754 crore in a railway business, and water supply project is around 708 crore in India, and its bag residential and institutional building project is 233 crore in Africa, and order of 150 crore in the transmission and distribution business in overseas market. Next update on ONGC has commissioned a new gas collection GCS in Bokaro coal bed methane block. It is the first gas collecting cum gas compression station in the Bokaro CBM coal bed methane block. So this major production installation in Patch A, and the block ONGC and IOCL joint venture with this ONGC as the GB operator. Next update on Sula Vineyards, the largest wine producer in the country. Sula Vineyards Tuesday announced the quarterly sales figure. So highest ever annual revenues in both its own brands and wine. As per the exchange, Sula registered the upside 15% in own brand sales,
104.3 crore during the March quarter as compared to 19.77 crore in the corresponding quarter last fiscal. And company has crossed sales volume 1 million cases with elite and premium wines, surging the past the 5 lakh case mark for the first time. The next update on HDFC Bank inform exchange that board will meet on April 15 to consider fundraising proposal up to 50,000 crore through issuance of debt instrument. The next update on REC, Power Sector Financial REC raised a 2,848 crore selling bonds maturing in 3 years and 3 months at the interest rate 7.51. Then last update on Zydus Life Science has received a final approval from the US FDA. Tavabrolin topical solution.